میں سب سے پہلے ہاشمی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ خیر مقدمی کلمات فرمائیں گے. محترم مظفر احمد ہاشمی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. محترم امیر جماعت جناب محمد حسین مہنتی صاحب، محترم ڈیلیگیٹس جو یہاں ایشیا کی 4 کنٹریز سے موجود ہیں اور 1 پاکستان میں، محترم ہمارے دین قوم، مختلف جماعتوں کے جو یہاں تشریف لائے ہیں، ان کو فردن میں نام نہیں لے سکتا. ماشاءاللہ بہت اچھے یہاں ہمارے اس آواز پر اور اس کاز کے اوپر ہمارے تمامی لوگوں نے پورے طور پر بھرپور طریقے سے لبیک کہا ہے. حضرات محترم، یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ فلسطین کا جو قضیہ پچھلے 60-62 سال سے چل رہا ہے، جس طریقے سے صہیونیوں نے ارض فلسطین کے اوپر اس مسلمانوں کی اس مقدس زمین کے اوپر جہاں ہمارا قبلہ اول ہے، اس کے اوپر جس طریقے سے بالجبر اور استعماری طاقتوں کے مدد سے پورے طور پر تسلط کیا، وہاں کے اصلی باشندوں کو نکالا اور اس طریقے سے پوری طور پر ان کی زمینیں ہتھیائیں، ان کا اپنے ملک میں اور اپنی سرزمین پر آنا جانا بند کر دیا. لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے لوگوں کو بے گھر کیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ فلسطین کی زمین ان کی ہے اور بقیہ جو تھوڑی بہت زمین وہاں کے اصلی باشندوں کے پاس رہ گئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی بے دخل کریں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف غزہ کی ایک پٹی، مغربی کنارہ اور تھوڑا سا القدس کا علاقہ، اور اس میں بھی بے انتہا پابندیاں ہیں، حتیٰ کہ نماز تک کوئی جوان آدمی پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا وہاں، جس کی عمر 55 سال سے. مسجد اقصیٰ کو جس طریقے سے برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طریقے سے اس کے بنیادیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے اس کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تمام چیرہ دستیاں اور تمام ظلم و ستم جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور امریکہ پوری طور پر ان کی اس میں حمایت کر رہا ہے. اس چیز کو دیکھ کر دنیا کے مسلمانوں کا ضمیر جو ہے وہ جاگا، اور تمام وہ لوگ جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں، جو ہیومینٹی اور صحیح معنوں میں اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کو ختم کیا جائے. چنانچہ اس وقت دنیا کے 5 بر اعظموں سے یہ ایک گلوبل مارچ ترتیب کیا گیا. یورپ سے، افریقہ سے، ایشیا سے اور امریکہ اور آسٹریلیا سے. ہمارا جو
اس وقت صورتحال ہے کہ ہم نے جو ایشیا سے انڈونیشیا سے شروع ہوا ہے، اس وقت ہمارے ڈیلیگیٹس میں انڈونیشیا کے لوگ ہیں، فلپائن کے لوگ ہیں، انڈیا کے ہیں، ملیشیا کے ہیں، پاکستان یہاں سے شامل ہو رہا ہے، آگے جا کر ایران، اس کا روٹ جو ہے ابھی انڈونیشیا ہوتے ہوئے کل یہاں پہنچا ہے، پرسوں جو ہے وہ واگا بارڈر سے انڈیا سے نمائندے آئے ہیں، اور اب یہ برائے ایران کے راستے سے ترکی جائیں گے، اس میں عراق کے بھی لوگ آئیں گے جو وہاں سے جوائن کریں گے، اور اب افغانستان کے اور ترکی کے۔ اس بات کی اصل میں تو روٹ یہ تھا کہ ہم سیریا ہوتے ہوئے جاتے، وہ بڑا صاف ستھرا راستہ اور قریب ترین اپروچ تھا، لیکن سیریا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر وہاں اس وقت جانا مشکل ہے، لہذا ترکی سے سیپ جو ہے یہ بیروت جائے گا اور وہاں سے پھر جارڈن۔ اسی طریقے سے جو دوسرے وفود آئیں گے، کوئی مصر کے بارڈرز پہ پہنچے گا اور وہاں اپنا اختتام کرے گا، یعنی فلسطین کے چاروں طرف سے اس مارچ کا اختتام ہوگا۔ اس کا مقصد مین یہی ہے کہ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ صہیونیوں کے اوپر، امریکہ کے اوپر اس طریقے سے دباؤ ڈالا جائے اور زیادہ سے زیادہ بیداری اس کے ذریعے عوام کے اندر پیدا کی جائے۔ یہی اس کا مقصد ہے، اور اسی کے لیے ہم نے یہ لوگ جو 2 ہفتے سے نکلے ہوئے ہیں اپنے گھروں سے، اور 2-3 ہفتے ان کو مزید لگیں گے، تب وہاں جا کر ان کا اختتام ہوگا، ساری صعوبتیں برداشت کر کے اور ساری تکالیف برداشت کرنے کے بعد۔ اس میں خواتین بھی ہیں اور ہر مذہب کی خواتین ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ کاز ہیومینیٹیرین کاز ہے، مظلوموں کی حمایت ہے، خواہ وہ کسی تعلق رکھتے ہوں یا کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اس میں آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین صرف مسلمانوں کا مقدس مقام نہیں، وہاں نصرانیوں کا بھی ہے اور یہودیوں کا بھی ہے۔ وہ یہودی جو زیونسٹ نہیں ہیں، وہ لوگ بھی اس میں اس کاز میں شامل ہیں، وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس کو اس طریقے سے تباہ و برباد کیا جائے، لیکن وہ جو شدت پسند ہیں، جو ایگریسرز ہیں، جو امریکہ کی پوری طور پر اس کی بالادستی چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو در پردہ اور وہاں کے فلسطین کے دوسرے باشندوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو اس کے خلاف ہیں۔ یہ مقصد یہی ہے اس گلوبل مارچ کا کہ تمام لوگ جو ہیں، میں ان تمام لوگوں کو جو اتنی دور سے ان صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ایک بہت عظیم مقصد کے لیے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں جماعت اسلامی کی طرف سے، کراچی کے شہریوں کی طرف سے، پاکستان کے شہریوں کی طرف سے، اور تمام پاکستان میں رہنے والی ان جماعتوں کی جو اس کاز کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں جناب والا پورے پاکستان میں
शायद चंद अफराद ऐसे हों, जनरल मुशर्रफ जैसे, जो इसराइल को तस्लीम करने का, वरना इस कौम में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इसके खिलाफ हो, या फ़लस्तीन पर जो उनका मशहूर नारा है कि पैलेस्टाइन फॉर पैलेस्टीनियंस, उसके खिलाफ। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ तशरीफ़ लाने का, तमाम पार्टियों का जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और इन लोगों के लिए दुआ गो भी हूँ, और आप लोगों से भी इस्तदा है कि जिस तरीके से सऊबतें उठा के ये लोग पहुँच रहे हैं और इस कॉज के लिए, तो इनके लिए हक़ में भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी मसाइल कबूल फरमाए। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ फ़लस्तीन फाउंडेशन के सेंटर कमेटी मेंबर मोहतरम मुदस्सिर ए खान साहब से। मोहतरम मुदस्सिर ए खान साहब। First of all, on the behalf of Palestine Foundation, I would like to welcome all international delegates who came in my homeland. This is my country, Pakistan. I welcome all of you. Particularly the delegates from Philippines, Indonesia, Malaysia, and particularly last, India. Palestine Foundation, since its inception, trying to create some awareness in the masses of Pakistan regarding to Palestinian issue. As you know, Palestinian issue is so much crucial, not only for Muslim world, but also it's a matter of humanitarian, because Israel continuously violate all international rules regarding to humanitarians. The activities that we performed till now, yesterday we had a walk at CVU regarding to free Palestine. Dr. Mohammed Hussain Mehdi Saab and other prominent leaders from Karachi attended that walk. Tomorrow we have another function at Mazar-e-Qaid at 3 p.m. I invited on the behalf of Palestine Foundation all delegates and all local members of the city to join us. It will be on 3 p.m. at Mazar-e-Qaid. There is a program for our international delegates. And finally, I would like to thank Jamaat-e-Islami, particularly Mohammed Hussain Mehdi Saab, for inviting us here at idare-noor-e-Huq. Thank you very much. Abdul Rahman Saab khitab farma rahe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Hadirin wal-Hadirat, بداية نشكر الله عز وجل ونشكر إلى صاحب البيت الذي قد استقبلنا باستقبال ممتاز. في هذه الفرصة السعيدة باسم المشترك في البرنامج Global March to Yourushilam أقول لكم عن احتلال اليهود على أرض فلسطين وعلى القدس. इंडोनेशिया के मंदूब जनाब अब्दुर्रहमान साहब तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा करते हुए फरमा रहे हैं कि आज आपके सामने मुख्तलिफ ममालिक और अक़वाम के जो नुमाइंदे हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं, वो सब आपकी हाज़िरी को देकर दिली शुक्रिया का इजहार कर रहे हैं, इसलिए कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हम और आप बहैसियत मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया का हर इंसाफ पसंद इंसान हमारे साथ यकजहती का इजहार कर रहा है. फضل. وأنا كنت شاهدت مباشرة ما فعلت الصهيوني
في أرض غزة. मैंने बहुत सारे ऐसे हालात का मुशाहिदा किया है कि जहां सहयूनी और यहूदियों ने मुसलमानों के साथ बदतरीन रवैया जारी रखा हुआ है. سكنت في غزة سنة كاملة ورأيت ما فعلوا الصهيوني من القصف مدرسة ومسجد وشعب غزة وصليت الجنازة للشهداء في غزة. एक साल मैं गज़ा में रहा और मैंने खुद मुशाहिदा किया कि वहाँ के मसाजिद और मदारिस और मुसलमानों के साथ जो इंसानियत सोच रवैया इख्तियार किया जाता है, दुनिया का कोई इंसान उसे किसी हैसियत में भी कबूल करने के लिए इम्कान नहीं है. وانفعل اليهود على ما يشاء من تغيير القدس وفلسطين يهوديا صهيونيا وما بقي أرض فلسطين إلا 20%. इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौजूदा मकबूजा एरिया में सिर्फ 20% मुसलमान आबाद हैं जिनकी कसम पुरसी और बदहाली की कोई इंतहा नहीं. وكل هذا الاحتلال والظالم والإخراج والقتال ما زال يجري في فلسطين. فلسطین میں اس وقت نہ تو پڑھنے لکھنے اور نہ کسی بھی قسم کی تعلیم کے حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے فلسطینیوں کو. ما زال يجري بمساعدة أمريكا وشركائهم بحق المخصوص في الأمم المتحدة. اور یہ سارا کچھ امریکہ کی آشیرواد اور اس کے حمایت سے یہودیوں کو نصیب ہے کہ وہ جو چاہیں مسلمانوں کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ زیادتیاں کریں. وقالت الصهيوني قولا ضد كل القوانين في العالم أن القدس عاصمتهم أبدا. اور یہ اعلان کہتے ہیں کہ قدس میں ہمارا قبضہ ہے, کسی کی مجال نہیں کہ ہمیں اس قبضے سے روک سکے. وبالتالي باسم شعب إندونيسيا وباسم المسلم وباسم الذين يحبون العدالة والتحرير أقول لكم أن فلسطين هذا لشعب فلسطين والأقصى لكل مسلم وهذا شعارنا. میں بحیثیت انڈونیشی مسلمان اپنے ملک اور اپنی ذات اور اپنے تمام نمائندہ انڈونیشی مسلمانوں اور ملکوں کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بحیثیت انڈونیشی مسلمان آپ سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے آواز اٹھائیں گے. أما من أهم الطريقة لتحرير الأقصى وفلسطين هو الاتحاد والجماعة. بلا شبہ فلسطین کی آزادی کے لیے ہمیں متحد و متفق ہونا پڑے گا, بغیر اس کے کامیابی ناممکن ہے. وإن شاء الله تحرير فلسطين قريب. فلسطین کی آزادی انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہمیں نظر آ رہی ہے. وهذا شعارنا الأقصى الأقصى الأقصى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ہمارا نعرہ ہے الاقصی لے کر رہیں گے, الاقصی لے کر رہیں گے, بیت المقدس لے کر رہیں گے. اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. انڈیا سے آئی ہوں اور بامبے کے رہنے والی ہوں اور فی الحال لاء کی پڑھائی کر رہی ہوں. میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو یہ فلسطین کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس کے بارے میں مطلب گئے ٹائم بھی یہ کارواں غزہ گیا تھا اور اس ٹائم ہم لوگ فلسطین جا رہے ہیں. میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اس کو اسلامک لڑائی کر کے نہ لے, یہ بھومی پتروں کی لڑائی ہم لوگ جو کہتے ہیں یہ فلسطینیوں کی لڑائی ہے. یہ ان کی بھومی ہے جو ان کا حق ہے اور انہیں ملنا چاہیے.
और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता है, ये भूमि माने देश, जो मराठी में हम लोग भूमि कहते हैं उसको, तो ये उनके ऊपर जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, ये किसी भी तरीके से इंसानियत इसे हम नहीं कह सकते। और मैं कहती हूँ कि मतलब सामने वाला वार करने वाला जितना स्ट्रांग है या फिर जितना ताकतवर है, उससे ज्यादा बचाने वाला या फिर उसको सहने वाला ज्यादा ताकतवर है। जिस तरीके से हमने देखा कि गाजा के लोगों में जो जीने की उम्मीद है, मतलब एक जगह पे एक गिरी हुई बिल्डिंग और उसी जगह पे एक नई बिल्डिंग, मुझे लगता है ये दोनों बिल्डिंगों में से जो नई बनाई उम्मीद की किरण है, जो टूटे हुए से कहीं ज्यादा ऊंची और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगी। और हमने देखा कि उनमें एक इंस्पिरेशन थी कि वो कितनी बार तोड़ेंगे, हम उतनी बार नया अपना जहां बनाते जाएंगे। और हमने उनसे यही सीखा है कि जिंदगी में कई बार हमें रुकावटें आती है, पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि ये जो सब मतलब हम लोग जो कहते हैं बॉर्डर, ये किसी भी इंसानियत से बड़ी नहीं हो सकती। हम लोग का जो कारवा है उसमें कई ज्यादा महिला और तरुणों का, मतलब जो यंगस्टर्स है उनका सहभाग है। और जब तक महिला हो या यंगस्टर्स औरतों का सहभाग है, तो जब तक यंगस्टर्स और महिला आगे है, तब तक मैं समझती हूँ कि ये कारवा की जीत है या फिर ये कारवा की एक स्ट्रॉन्ग साइड है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये सरहदें जो है वो किसी भी इंसानियत से बड़ी नहीं है। उसी के बारे में मैं दो मतलब गानों में कहना चाहूंगी। जिंदा है इंसान जिंदा है, जिंदा है इंसान जिंदा है, कोई लाख हमें पाबंद करे, इंसानियत की दावत जिंदा है, जिंदा है इंसान जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum and good evening, dear guests. My name is Ms. Nusrat Howard Moore from Voice of Palestine, Malaysia, and I am delighted to be given the honor of joining this global march to Jerusalem, convoy of peace, and carrying the flag for the Malaysian people. My colleagues Awzani Hassan and Ali Amri will be joining us representing the Voice of Palestine, Malaysia, and also the Malaysian people from Tehran onwards, only because we had some difficulty arranging for our visas and traveling arrangements. Anyway, we continue to struggle for the Palestinian. We continue to struggle and empathize for the Palestinian struggle for basic human rights, dignity and justice against the Zionist apartheid regime, which inflicts collective punishment on the Palestinians, bombards their homes and kills them indiscriminately, whilst continuing to incite war against their near and far neighbors. For this, Malaysia, the Voice of Palestine, Malaysia, and its people, its politicians are united, closing ranks to always be fighting and empathizing and standing behind the Palestinian people for a just cause. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We would like to express our heartfelt gratitude to our host, the Jamaat-e-Islami, and some notable personalities all around us, brothers and sisters in Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before I will deal on the issue of Palestine and our march to Jerusalem, inshallah, would like to inform these distinguished personalities
that the first association of Muslim, we call it Muslim Association of the Philippines, in the early 1900s was organized by people who migrated to the Philippines coming from Pakistan. This is the time before we sent scholars to Egypt to study Islam. The Pakistanis already arrived there in the early 90s, and they meet with my parents, especially my late grand-uncle Ahmad Mukaw Alonto, who was a King Faisal Award for service to Islam, and also one of the 100 great Muslim leaders of the 21st century, a book written in India from the Aligarh University. And we thank very much our Pakistani brothers for introducing, especially also the Tabligh coming from Pakistan and Bangladesh, who came there in the early 1900s. Therefore, in 1948, when Palestine was partitioned through United Nations resolution, this was instigated, of course, by the United States of America, Great Britain, and some Western countries, helping the Israeli people, the Jews, to have their own country. So it started with the partition that later on became, in 1967, an occupation of the Palestinian homeland. United Nations created Israel in one resolution, but when Israel became a nation, until now, they have not respected more than 70 resolutions coming from the United Nations regarding the problem of Palestinian people. Like a genie, Israel could be likened into Aladdin, the wonderful lamp of Aladdin. When he squeezed the lamp, this genie came out, and that is Israel. When this genie came out, he does not want to return again to the genie. And this genie, who became small, from small to big, has squandered the Palestinian rights, the land of the Palestinians before, and now Israel is now casting doubts and problems not only for the Palestinians, but to the whole world, including the Philippines. We are affected by this giant created by America. It started with an attack dog. Now the attack dog has become so very big that he is now ready to attack anybody who is ready to bite anybody. Before he bombed Iraq, and now he is planning to bomb Iran. So with this present situation, the Muslims are so disunited. Israel will always abuse and abuse, take advantage of the disunity of the Muslim Ummah. So brothers and sisters, we appeal to you that Palestine is the cementing factor for the unity of the Islamic Ummah, because Masjid al-Aqsa is there, and Masjid al-Aqsa symbolizes as the occupation of the second Qibla of the Muslim Ummah. The first Qibla, and then transferred to, of course, to Masjid al-Haram. So brothers and sisters, if we cannot help our brother Palestinians, sooner or later there will be no more Palestine that we will be talking about, and Aqsa will be maybe dismantled by this mighty power of Israel. So I appeal to you that you should unite, and if you're going to join us physically in this march to Jerusalem, at least with your prayers, you can support us. Inshallah, we will be achieving what we want to go, what we want to achieve. Unity in diversity, whether you are a Pakistani, whether you are an Indian, or you are a Philippine or Malaysian or Indonesian. We are one Muslim Ummah. We are one body. Anything that feels pain, the whole body feels the pain. And that is the hadith of
Nabiyina Rasulullah Muhammad Rasulullah. So, brothers and sisters, I now appeal to you that inshallah we will be marching come March 20 and we'll be hoping that we will be achieving our goal. Okay, brothers and sisters, takbir! 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 Now I request Mr. Maruf from Indonesia. He will deliver his speech. Mr. Maruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like to share our feeling when Indonesia get independent. So if there is a Palestinian here, we will share how happy we are when we get a freedom. Minta tolong untuk Mbak Taskia untuk memimpin, please. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! One nation! One nation! One nation! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ये जो हमारे दोस्त बाहर से आए हैं, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, फलस्तीन और भारत के लोग शामिल हैं, हमारी आवाज भी इंशाअल्लाह उनके साथ है। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्तलिफ तरीकों से हर एक मुल्क ने इसमें नुमाइंदगी की और उन्होंने पार्टिसिपेट करके यकीन दहानी कराई कि यरूशलेम जो है वो खास तौर पे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी एक यूनिफिकेशन का मुजाहरा है। मुसलमानों के लिए एक मुतहद और यूनिटी के लिए जरूरी है कि वो यरूशलेम को हासिल करें। लेकिन हमें भारत की जो खातून हमारी बहन जो उन्होंने जिस चीज का इजहार किया, हम समझते हैं उन्होंने हमारे दिलों को भी गरमाया है और हम उनका भी शुक्रगुजार हैं कि वो उस फलस्तीन की जद्दोजहद में शामिल हैं। मुझे यकीन है कि अगर दुनिया में तीसरी जंग अजीम हुई तो उसका जिम्मेदार इसराइल और अमेरिका होगा, मुसलमान मुल्क नहीं होंगे। यरूशलेम मुसलमानों के लिए एक गैरत की चीज बन चुकी है। मुसलमानों के लिए जब तक उनमें इत्तेहाद नहीं होगा यरूशलेम हासिल नहीं किया जा सकता। आज तमाम मुसलमानों को चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पे होकर जद्दोजहद करते हुए और आगे बढ़े, और जो ये मार्च इन दोस्तों ने किया है हमें चाहिए कि हम सब इनके साथ मिलकर करें। मैं मुस्लिम लीग की तरफ से आप तमाम साथियों और दोस्तों को यकीन दिलाता हूं जो इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान हासिल करके हमने खून की कुर्बानियां दी थी, इंशाअल्लाह ताला यरूशलेम के लिए, इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के मुसलमानों का बच्चा बच्चा कट बनने के लिए तैयार है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस वक्त
जमात-ए-इस्लामी के हम मशकूर हैं कि उन्होंने ये मौका फराहम किया कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उनसे हमारी मुलाकात कराई। इस फोरम के तवस्सुस से हम अपने भाइयों को ये यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि ये आप जिस मसले के लिए घर से निकले हैं, ये मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, मुसलमानों के लिए भी अहमियत का हामिल है कि मुसलमानों का किबला अव्वल है, लेकिन वो सरज़मीने अंबिया है। तमाम मिल्लत और मज़ाहिब के लोगों के लिए वो काबिल एहतराम है और इस वक्त आलमे इंसानियत का ये फरीज़ा बनता है और खुसूसन जो लोग अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, वो अमेरिका हो या बरतानिया हो, उन्हें देखना चाहिए कि इस वक्त फलस्तीन के अंदर जमहूरियत क्या मांग रही है। वो आज़ादी मांग रही है इसराइल से। ये उनकी जिम्मेदारी है कि तमाम अक़वाम आलम वो फलस्तीन भाइयों के शाना बिशाना खड़े होकर उनको आज़ादी दिलाएं। हम इस फोरम के तवस्सुस से ये जो काफिला रवाना हो रहा है, इनको यकीन दहानी कराते हैं। हमारी अखलाकी मदद आपके साथ है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम अल्लाह के नाम पर आप लोगों को इस सफर में अलविदा कहते हैं। तो मैं आपके इस ग्लोबल मार्च टू फलस्तीन की पूरी तरह हिमायत करता हूं अपनी जमात की जानिब से और इस बात का पूरा यकीन दिलाते हैं हम आपको कि हम आपके साथ इस मार्च में नजरें लगाए रखेंगे जब तक आपकी फतेह नहीं हो जाती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है क़ारी अब्दुल मन्नान, जमीयत-उलमा-ए-इस्लाम से मेरा ताल्लुक है। मैं इन मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और जमात-ए-इस्लामी को मुबारकबाद देता हूँ कि हर जिहाद में हर हक बात कहने में इन्होंने पहल की है। अल्लाह इनकी मदद और हम सब की मदद फरमाए। ये जो काफिला इंसानियत पर जुल्म हो रहा है, ये काफिला ये तड़प लेके उठे पूरी दुनिया से कि हमारा वो क़िबला अव्वल और वो मुक़द्दस मकाम जहां पर सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई थी, आज वो मुक़द्दस मकाम नापाक कदमों के नापाक हुकूमत और नापाक लोगों के कब्जे में है। हम इस काफिले के साथ हैं, हमारी दुआ है और हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। अल्लाह पाक इनकी और हम सब की ये ख्वाहिश पूरी फरमा दे कि जालिमों से ये मुक़द्दस मकाम आजाद हो जाए और मजलूम जो है जालिमों से निजात हासिल कर लें। जज़ाकुमुल्लाह। सलाम। सबसे पहले तो जमात-ए-इस्लामी क्या मशहूर है कि उन्होंने हमें इन मुजाहिदीन से मिलवाया जो लोग फलस्तीन के मजलूम आवाम से आवाज मिलाने के लिए अपने घर बार सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में उन मजलूमों की हमायत में उनके इश्यूज को जिंदा करने के लिए ये लोग जो कुर्बानी दे रहे हैं, हम उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं और सलाम पेश करते हैं और हम इंशाअल्लाह यकीन दिलाते हैं कि हम इखलाकी माली जिस तरह की भी मदद दरकार होगी हम इन हजरात के साथ हर तरह से ताउन करेंगे। आज हम फलस्तीन के इस ग्लोबल मार्च के सिलसिले में जमात-ए-इस्लामी के इस प्रोग्राम के तवस्सुस से न सिर्फ अहले पाकिस्तान बल्कि दुनिया को यह पैगाम देना चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान इंसाफ के इन तकाज़ों को बुरोकार लाने के लिए इस ग्लोबल मार्च के तमाम साथियों के
शाना बशाना दाने दरमे सुखने अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए इंशाअल्लाह तुर्की से बढ़कर जिम्मेदारियां अदा करने का सबूत मुहैया करेंगे। वमा तौफीक़ुना इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। While appreciating Jamaat-e-Islami and welcoming the foreign delegates, we support the cause of the Palestine, we support the movement of Global March, and also we hope that the concerns of the world will be awake after this Global March, and we pray for the success of this march. Thank you. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो जमात-ए-इस्लामी सिंध और जमात-ए-इस्लामी कराची की तंजीम का बहुत मशकूर हूँ कि हमेशा की तरह उन्होंने एक बहुत ही अहम मौजू पर आज हम सबको यहाँ जमा किया है, और खुसूसी तौर पर ये जो डेलीगेशन आया हुआ है, इससे आज हमें मुलाकात का जो शर्फ हासिल हो रहा है, उसके लिए भी हम जमात-ए-इस्लामी के बहुत मशहूर हैं। मैं समझता हूँ कि जिस नेक मकसद के लिए ये डेलीगेशन निकला हुआ है, ये मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ ममालिक से जो डेलीगेशन ये आया हुआ है, और जिस नेक काम के लिए निकला है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी हो। और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तमाम कारकुनान की तरफ से, अकाबरीन की तरफ से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी नसीब करे। I would say that I'm highly impressed that this delegation, which consists of people from different countries, of different religions, it's highly appreciated that in this materialistic world, where nobody has any time for anything else rather than looking after their own affairs, you have left your homes, your beloved ones, and you have gone on a great cause. I wish you all the best in the global march towards Jerusalem. Thank you. मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम इनकलाब हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी अलैहि रहमा के नाम से और काम से कौन वाकिफ नहीं कि जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी उम्मत मुस्लिमा के जो मसाइल और जिनके हुकूक और इस्लाम की अशात बदली की गुजारी, अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी अलैहि रहमा ने एक मुसलमान खादिम होने के नाते पूरी दुनिया में इस बात को दावर करवाया कि मुसलमान अमल पसंद हुआ करते हैं, क्योंकि हमारी मजहब और दीन यकीनन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर है कि जो अमन के सबसे बड़े दाई बने। हम शुक्रगुजार हैं कि आज जमात-ए-इस्लामी ने हमें उस अजीम वक्त के साथ यहां बिठाया कि जिन्होंने उस मकसद को दुनिया में उजागर करने की कोशिश की है कि जिसका ताल्लुक इंसानियत के साथ जुल्म की है, और हम समझते हैं कि ये वक्त जो यहां से चल रहा है और आगे अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, अल्लाह ताला इनको कामयाब और कामयाब फरमाए। और यहां दीगर ममालिक के मेहमान यकीनन यहां मौजूद हैं, हमारे लिए काबिल सब इफ्तिखार बात यह है कि यहां मौजूद हैं, और हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया में जहां भी इंसानियत पर मजालिम हो रहे हों, उसमें चाहे कश्मीर हो, उसमें चाहे फलस्तीन हो, या दीगर इस्लामी ममालिक हों या दीगर ममालिक हों, जिस तरह मशरक़ी तैमूर का मामला आना फराम तय हो गया, उम्मीद है इंशाअल्लाह फलस्तीन के मामले में भी कोशिश की जाएगी और कश्मीर के मामले में कोशिश की जाएगी। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वाजिबुल इकराम सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ ज़ुलमा इकराम और मेरे अजीज मंदुबीन ख़वातीन हज़रात, आज जिस मकसद के लिए जमात-ए-इस्लामी ने हमें यहाँ पर जमा किया है,
मैं समझता हूं कि ये दुनिया का बहुत बड़ा एक सुलगता हुआ मसला है, और जिस तरह गासिबाना कब्जा इसराइल ने जो है वो फ़लस्तीन पे किया हुआ है, उसके लिए गो के अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया की जो है वो नुमाइंदगी इंदा कौमों का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। लेकिन अफसोस कि जहां फ़लस्तीन का मामला आता है, अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार हमें थोड़ा नजर आता है। वहां उसके सामने ना इंसानियत है ना जमहूरियत है, बल्कि उसको जो सपोर्ट करते हैं उसमें अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन ममालिक जो चैंपियन कहलाते हैं, अपने आप को इंसानी हुकूक का भी आलमबरदार कहते हैं, जमहूरियत का भी, वो इस मामले में अपना जो गिनाऊना किरदार है मुसलमानों के और फ़लस्तीन के अवाम के खिलाफ अपनाए हुए। The participants of the global march towards Jerusalem, distinguished religious, political and social leaders, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I seek your indulgence to speak in English just for the foreign delegates that they may understand my point of view. I know the history of Palestine from 485 BC till this date today, but it's not the time, otherwise I would have been in many traditional, so far introduction is concerned, my name is Mir Nawaz Khan Marwat. I am the Assistant Secretary General of World Muslim Congress, the International President of Asian Conference of Religion Peace, and one of the World Conference of Religion President of also of the Peace. This Palestine, in particular the Yourushilam, which was burned by Bakht Nasr, the Babylonian king in 485 BC, and when Prophet Daniel was taken as a prisoner, and Hazrat Uzair then subsequently collected some portion of Torah. I know from that date till this date, this remained from 640 AC after Christ, we don't say AD. It remained in the Muslim occupied days of Hazrat Umar, it was conquered, not a single drop of blood was shed. Then again it remained in the Muslim occupation till 1099, when thereafter, after 90 years, it was reconquered by Salahuddin Ayyubi. Again the Western writers say that a single drop of blood was shed. Then again thereafter, when it, after Salahuddin, it remained in the Muslim possession till 48 and 1967. Unfortunately, the United Nations has been subjected to the United Nations whims. This Israel is the illegitimate child of the blue-eyed boy of United States of America. I'm sorry there is no time, otherwise I would explain how the people of Gaza and Palestine, the atrocities were perpetrated on them. In December 2008 and January 2009, 1,400 people were killed. It was one. There are sanctions against them. Today they are suffering. There are no fuel. Even recently, Mohammed Hania wanted to visit Egypt to have direct connection of oil to be supplied to Gaza, but the Israel refused to allow him to go there. We remember what happened in 2010 on 30th of May, when the flotilla, this name was probably, as far as I correct, Magi Marbara. This was the ship was a Turkish ship, and people like you, they were going there. Humanitarian workers were there, and the Zionist regime attacked that flotilla. 9 persons were killed, and the goods carried on there were plundered and taken into possession. Many were arrested. Not a single voice was raised in the United Nations from the other side. Though many Muslim and non-Muslim countries raise the voice, it is nothing, it's not a matter of Muslim alone. It is a humanitarian problem. And I really congratulate all the participants of this great march
march towards Jerusalem, the unity that you have shown, the dedication and the perseverance of this cause that you have undertaken, I wish you success. The day will dawn that the people of Palestine will be free. Jerusalem is not only to the Muslim, it is the Christian and Jew. One bit let me explain. They say it's the promised land. This is a myth which has been associated and repeated by Israel and its supporters like USA. Palestine was not a land without people. They were the people without land. So I wish that you a safe journey. Bon voyage to you. Safely you accomplish your task. I think the Pakistan, one instance I will quote, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of this nation, in 1946 while coming from London with Qaid-e-Mallat Liaquat Ali Khan, asked the Grand Mufti of Palestine and his delegation that there is a conspiracy in the West with the complicity of Jews that Palestine will be occupied. So be aware of that. We follow his footprints. The Pakistani nation entirely stands behind you. Wish you best of the luck. Good luck to all of you. Thank you very much, sir. I'm Hussain Ansari and I represent a very large expatriates community in the Kingdom of Saudi Arabia. And I'd like to thank Jamaat-e-Islami Karachi taking up this issue, global issue. And yet again they have proved that entire human race is our brother and sister, and we care about you, and they stand for any aggression against any person in any part of the world. Secondly, this global march, we like to thank you and we like to support you. Our brother and sister who are in the Kingdom of Saudi Arabia, they are not here, but they are with you. Their prayers are with you. They pray for your safety, they pray for your safe return, and they pray for the success of your cause. And finally, all the political parties who are here, I like to thank you that you rose above your political differences and came here to support these guys who have left their homes, who may not return to their land, God forbid. We pray that they return to their lands. But you came here and you supported them. I really like to thank you. We are all Pakistanis, we are all with them, and I really like to thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन की लड़ाई के बारे में भी एक जुमला इस्तेमाल किया था, अफगानिस्तानियों का अफगानिस्तान, इंग्लिस्तानियों का इंग्लिस्तान, फिलिस्तीनियों का फिलिस्तान, ये गांधी जी ने कहा था। और तब से लेके आज तक 125 करोड़ आबादी आज हिंदुस्तान की है। लगभग पूरा के पूरा हिंदुस्तान फिलिस्तीन की लड़ाई के बारे में आज फिलिस्तीन के लोगों के साथ में, दमखम के साथ में खड़ा है। पहला वाला जो पिछले साल का जो एशियन मार्च टू गाजा निकला था, उसकी पहल भी हिंदुस्तान की तरफ से की गई थी, और अभी के भी जो ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम में हिंदुस्तान की भूमिका काफी अहम है। अभी हम लोगों को जब राजघाट में महात्मा गांधी के मजार पर जब सियाब किया गया, हिंदुस्तान की मेजर पॉलिटिकल पार्टी के 2 नुमाइंदे आए हुए थे, जो एक मणिशंकर अय्यर है जो साउथ एशियन प्रोसेस के एक शायद कारकुन है, और दूसरे रामविलास पासवान जो हिंदुस्तान के दलितों के नेशनल लीडर है। इन दोनों लोगों ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों का अगला ग्लोबल मार्च फिलिस्तीन के लिए निकलेगा। ये उन्होंने ऐलान किया, जो मैं आपको बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। इतनी बातें रखकर आप सब लोगों ने जो इंतजाम किया है लाहौर से लेकर कराची तक, हम सब लोग बहुत ही गदगद है कि इस ढंग से पाकिस्तान में जो कुछ हम लोग का स्वागत हर जगह हो रहा है। और आज यहाँ जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से जो ये दावत दी गई है, उसके लिए मैं पूरे हमारे डेलीगेट्स की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। My dear friends from Pakistan and all the other Asian countries, we are truly glad at being here back with our friends and brothers and sisters of Pakistan, who we know are totally committed to the cause of Palestine. First, I'd like to say, and I think you know this part,
that the world is on the verge of a great change. The geopolitical situation is changing rapidly. The empire is collapsing. Israel is no more the military power that it was. It lost the battles in 2000. It lost the battle of 2006 to the Lebanese national resistance, and it lost the battle of 2008 to the Palestinian national resistance in Gaza. Israel is no more the political or the military power it was in 1967. The American empire is collapsing, and I would say thanks to also the contribution of the Pakistani, Afghan, Iraqi, Somali, Yemeni people. We can also see the changing situation where the governments of India and Pakistan are coming closer together. We can see the changing geopolitical situation where India is standing with Iran despite the American pressure. We can see the changing global situation where India continues to vote for Palestine despite the presence of the Americans in India. And that is why we are, as Indians are here. This battle for the liberation of Palestine is the battle for the liberation of India as well. The empire, the British Empire, is back in a new form in the age of neoliberal capitalism in Asia, in each of our countries. And I know that from Indonesia to Palestine, from Bangladesh to Iran, from Pakistan to India, the people of Asia are awakening. The dormant energies, the dormant might of the Asian people is now re-emerging, and we can see China, Russia, and the new superpowers emerging. So there is no cause for worry. I believe that the future is bright. But the point is, as committed people leading political parties, as people leading religious organizations, as intellectuals, as writers, as students, as youth, as people of the media, are we willing to take on this challenge? Are we willing to take on this responsibility and unite as humanity? Yes, there is a question of Islam. Yes, there is a question of Christianity and Judaism. I am a student of comparative religion. I understand these entire complexities. I am not a religious person, but Jerusalem stirs my soul. I am not a religious person, but the Masjid Aqsa and the Qubbat al-Sakra cries out to me when I see that it is under threat. Because Jerusalem, down the thousands of years, has spoken to humanity. And we, as humanity, have to stand up to protect the universal heritage of humanity. It was in the Axial Age of 600 BC, I agree, not the after death and before a common era, as you call it, when the prophets of our time, from Ezekiel to Isaiah to Buddha to the great Hebrew prophets in the land of Palestine spoke out. And Jerusalem's message was very simple. It was a practical message. Jerusalem gave hope to the downtrodden because Jerusalem and those prophets spoke of social justice and compassion. That was the message of Jerusalem. And it is one of the great spiritual centers of humanity. The other point is that not only is Palestine a very important issue for the Middle East, as some people call it. No. Palestine is the central geopolitical issue of our times. There cannot be any debate on that matter. And at the center of the issue of Palestine lies the issue of Jerusalem. Jerusalem is the heart and soul of Palestine. There cannot be a Palestine without Jerusalem. So the people in the global march are committed to certain principles. We are committed to the freedom for Palestine. We are committed to a free Palestine with Jerusalem as its capital.
We are committed to the right of the return of the refugees back to their homeland. We are committed to ending the siege of Gaza. We are committed to demolishing the apartheid wall, which is a monstrosity on the Holy Land, on the face of the Holy Land. We are committed to ending the checkpoints and all the other barbaric actions taken upon by Israel, which is an apartheid, Zionist, Nazi state of our times. It is a Nazi state. It is an apartheid state. Now comes the point of the solution. There are two solutions. Both are acceptable by the Palestinian people. One is what is enshrined in the United Nations resolutions of the borders of 1967. Israel till date has not given in writing what its borders are. It is the only country in the United Nations that has not given a map of its country to the United Nations. It is also a fallacy to say that the United Nations created Israel. The vote was only held in the General Assembly. It never went to the Security Council. It has no legal standing. It was built on the basis of war, of the weapons that came in from the West, of the money that came in from Europe and America. It has no legal standing. So what is the solution? As I said, a two-state solution is acceptable to the people of Palestine. But as long as East Jerusalem with the old city is part of that solution. But the Israelis will never agree for that. I know that. Then what is the other solution? The other solution is the right solution of one state for Muslims, Christians and Jews living in a democratic state, where they share the Holy Land as they have for more than 6,000 years. That is the message of Jerusalem or Palestine. And lastly, I'd like to state the reason behind the Global March, our objectives, our strategy, and the plans ahead that we need to plan collectively. After the first Asian convoy to Gaza, which was the first collective Asian attempt, we marched for 38 days. From the 2nd of December 2010, we entered Gaza on the 2nd of January 2011 and returned home by the 7th or 8th of January. It was the longest march by any people for the cause of Gaza. And we as Asians did that. And we need to really be proud of what we are now contributing to the Palestinian cause as a collective Asian people. During the course of that Gaza convoy, we met up with people in Gaza. And our friends in Gaza said, we are facing the helicopter gunships, the F-16s, the phosphorus bombs, the siege. But we are standing up and fighting and resisting. That is the message of 15 lakh people of Gaza who are standing up against Israel and America. What superpower are we talking about? Israel and America are finished. They are a joke. The other point is, so the message from Gaza, from our friends in the West Bank was that now it is time to begin the march for Jerusalem. The Palestinian ambassador said today that on the last Jummah, there were barely 2 rows of people standing in the Masjid Aqsa. They are stopping people from coming to pray, from exercising the basic human democratic right. Nobody can oppose people from going to pray at the masjid. So what are they actually doing? They are cutting away Jerusalem from the Palestinians. Be it the Church of the Holy Sepulchre, be it the Church of the Nativity, or the Mausoleum of Prophet Abraham in Hebron, all of them are under siege. The entire Holy Land is being destroyed. So then we decided, after the Asian convoy, after the Arab Spring, and let me tell you 2 things about the Arab Spring. It was an uprising against neoliberal capitalism and imperialism. It was an uprising against the imperial project. It was not only about jobs and employment. And at the heart of the Arab Spring lies Palestine. And it was the 2 intifadas of 87 and 2000.
And the second intifada is referred to as the Arts Intifada. So it was these two intifadas, the continued resistance of the Palestinian people who stand at the front lines, who have been at the vanguard of the resistance since 1917, since World War I, that are burning as a beacon to the entire world. Out of that was born the idea of the global march to Jerusalem. And again, as Asians, we must be proud that this idea did not come from the West. This idea came from the soil of Asia, which has given birth to the 8 great religions and cultures and many more of the world. This is the land of the great prophets, all of Asia. Then we began a process of consultation with all our friends in the world, and the idea of the global march developed. So the objective is very clear. We want to ensure that Jerusalem becomes the center of political debate across the world, for mass mobilization across the world. It should be a part of the UN debates, part of our governments, part of our parliaments, part of civil society, religious organizations. Everywhere, Jerusalem should become the central issue of debate, concern and mobilization. This is why we are marching for more than a month from our own countries. And our strategy is to go from country to country, city to city, meetings like these with the media, with organizations, political parties and what have you, to ensure that we are on the headlines, the front pages for the next month. And this is what you as the media have to ensure. And to also see that the political parties, that friends of the civil society are now going to commit themselves, not only by mere words, but with action. That when the Indian political parties decide on the convoy, we want our friends from Pakistan, from the various political parties of Pakistan and the various other Asian countries to be part of a convoy of political parties going to Gaza or to Jerusalem. This is where we now need to raise the movement to. Lastly, I'd like to say that, as I said in the beginning, that the world is on the verge of great change. It is clear. The balance of power is changing. It is not only about governments deciding our future. We as a people can and will decide our future. It is happening in Greece, it is happening in Occupy Wall Street, it is happening in Pakistan, it is happening in India and the world over. If the governments do not have the courage to take on the empire, if the governments of the world do not have the courage to take on the neoliberal capitalists, we the people of the world will decide. And we the people of the world will decide the fate of Palestine and Jerusalem. And lastly, let me end with the slogan that we have given. This year in Jerusalem. This year in Jerusalem. Welcome all the delegates from Indonesia, from Malaysia, and from India, from Philippines, and now from Pakistan also. I think this is a great occasion for us that people from all over the world are going towards Jerusalem for the freedom of Jerusalem, for the freedom of Palestine, and for the great and noblest cause of getting the oppressed people out of the clutches of Israel and USA. So at this occasion, Jamaat-e-Islami Karachi has arranged a reception in the honor of all the delegates, and we have invited all the political parties of Pakistan as well as all the eminent citizens of Karachi and the ulama ikram also. And I am thankful to all of them that they have come at this occasion to give honor to our friends, those who are going towards Jerusalem. They have left their houses, their children, their country for 1 month, and they are taking all risk and going towards Jerusalem, passing from all of the countries like Pakistan and then Iran and the Turkey and then Lebanon and
they are going towards the border of Israel and the Palestine, and hopefully we are all praying that God, Allah creates a time when they can enter into the Jerusalem and get a salute from us to the people of Jerusalem, that we all from the country, from all over the world, and from Pakistan especially, are praying for the day to come when the Palestine will become a free country. As mentioned by Mr. Firoz Miti Borwala, that there was an attempt to go towards Gaza. Gaza at that time was in a very huge problems, as you know, encircled by Israel and unfortunately by our Muslim country Egypt. They are all encircled and there was no entry possible to enter into the Gaza, not only the human being but also any supplies, medical or food supplies to them. That was a terrible era, and at that time Freedom Flotilla has played a very vital role in the awakening of the conscience of the world. And that was the time when the Turkey has taken a lead. They have arranged for all these things and they have supported all the way, and that has created a real sort of awakening throughout the world. So I think this is, we have been all taking it as a Muslim problem, but very nicely mentioned by our friends by Miti Borwala also, as well as our from India, that we don't take it as a Muslim problem, it's a human problem. It's a problem of the humanity, the future generation. The genocide going on in Palestine is really a thing when the human conscience should become alive. We all we are all looking into the Palestine, the Jerusalem, the Gaza. You will find the most of the martyred, the oppressed people, the people who have been killed and who have been depressed and who have been taken out from their homes, and refugees. You will find the refugees from Palestine at the moment #1 in the world. In the Muslim countries and even in the Europe and everywhere, you will find the refugees from Palestine, and that is giving you a sign how these people have been uprooted from their houses have been burned, their children have been killed, and everywhere this type of genocide is going on. So after Freedom Flotilla, now they have gone for this march toward Jerusalem. I think we would like to salute the idea. It's a wonderful idea that the whole world, and an international event is going on, the whole continent, and especially Asia, our continent. We are very happy. People from all around Asia are here. Half of Asia are here, and half of Asia are going to come in the days when they will be passing through, the convoy will be passing through these countries. So we are very happy that Asia is united, and Asia has taken the task of liberation of the Palestine, and this is the greatest cause, this is the noblest cause. And I would like to mention to you about the Jamaat-e-Islami. We have always supported the minority or the majority, the Muslim or the Hindu or the Christian, whosoever have been oppressed or have been attacked by anybody in the world. We have always supported them, and we have been with them shoulder to shoulder, and we have been supporting to them. At this time, as mentioned by our friend, it's a real thing that the Muslim countries and the rulers of the Muslim countries, it was the very important assignment of all these our countries to support and to come out with the Palestine, but we failed in that. And now the whole world is awakening and the whole world is coming out, and especially the delegates from Hindustan. I welcome them that they have come over here in Pakistan and passing through the whole Muslim countries and going toward Palestine. We are very happy, and we are indebted to you
that you have taken so long journey, and hopefully, inshallah, this will be a very successful journey. Inshallah, this will contribute very highly towards the liberation of Palestine and Jerusalem. We have been all knows that Jainism has played a very bad role in the Arab countries, and they have been killing. They had attacked Beirut, they had attacked the Gaza, they have attacked the different Syria and Jordan and everywhere in the past also. And these countries are now not in a position to come out to help the Palestinian people. So I'm very happy, and I would like to thankful to all of you, the delegation, and hopefully looking, inshallah, this journey will be a great milestone in the liberation of Palestine and Jerusalem, inshallah. And inshallah, 30th March, I would like to mention about the 30th March. 30th March is the day when these delegation and these people, they will be around the border of Palestine, around the border of Israel. And they will be praying Jummah prayer also, they will be making slogan, and they will be trying to enter into the Palestine border, and we should all pray for them also. And they said this day only, 30th March, should not be a day for the march toward Jerusalem at Beirut or at Jordan, wherever they will be trying to enter the border of Israel or Palestine, but it should be commemorated, and it should be from in the whole of the world. We will be on 30th March, we should all unitedly support in the masjid and everywhere. We will say the free Palestine, free Palestine, free one Asia, one Asia, one Asia. So I am very much thankful to all of you, and we are praying and looking forward the day to come when Palestine will be free and Jerusalem will be free, and the whole world will be in a peaceful atmosphere. At this time, at this juncture, we see Afghanistan killings are going on, Iraq killings are going on, Palestine thinks people are uprooted. This is not a peaceful world. We look for a peaceful world where all the people should settle their issue, and we hopefully looking, inshallah, we had a good march towards the friendship with India, and we look forward for the settlement of the issues which are around India and Pakistan, and we hopefully looking that India and Pakistan should live like friends also in the days to come. Thank you very much.